Hello everyone. In this video we will study about the soil moisture relations. Soil moisture relations. Okay. Now before that we have to discuss about the land preparation for irrigation. How we are going to prepare the land for irrigation purpose is we have to discuss. Now firstly we are going to remove the thick bushes and jungles etc. from that raw land एंड हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बुशेस एंड जंगल्स है उसके रूट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड विल गोइंग टू बर्न दैट रूट्स ओके सो दैट विल clean up the raw land for the cultivation. Okay, now secondly that land should be properly leveled so that we can easily supply the water for irrigation. Second, slope in the direction with falling gradient should be made. Now in this we have to provide a slope for the land in the falling gradient. Nextly, the permanent supply ditches should be excavated and also the water courses should be excavated. And finally, the drain ditches should be excavated so that the excess of water can be easily drained out. Okay, so that means the proper drainage system should be provided for the irrigation purpose. Now, here if you see, there is a diagram which shows the soil water parameters and the classes of water. Okay, classes of water. Here firstly hygroscopic water is there, then capillary water is there, and then gravitational water is there. Okay, now for this, सपोज एक ओवन ड्राइड सैम्पल है एंड दैट सैम्पल वी आर गोइंग टू पुट इन एन ओपन एटमॉस्फियर. ओके, एक ओवन ड्राइड सैम्पल है एंड वी आर गोइंग टू पुट दैट सैम्पल इन एन ओपन एटमॉस्फियर. अभी क्या होगा कि अभी हमने जो एटमॉस्फियर पे ओपन रखा है ओवन ड्राइड सैम्पल, दैट सैम्पल विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फियर. ओके, जैसे कि फ्रिज में जो फिनोमेनन होता है जो वो सेम फिनोमेनन यहाँ पे होगा. मतलब फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पे अगर कोई भी बॉटल आपने रखी है और वो बॉटल हमने निकाल के ओपन एटमॉस्फेयर पे रखी, तो क्या होगा कि उसके सरफेस पे मॉइस्चर, इट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर. ओके, द सेम फिनोमेनन विल हैपन हियर. ओवन ड्राइड सैंपल भी अगर ओपन एटमॉस्फेयर पे रखा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा, तो क्या करेगा वो सम मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से. अभी वो जो वाटर है, मॉइस्चर है, दैट वाटर इज़ योर हाइग्रोस्कोपिक वाटर. ओके, अभी ये वाटर जो है, ये वाटर रूट्स, प्लांट्स के जो रूट्स है वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए. ओके, सो दिस इज़ वेरी लेस इन क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्लांट्स. नाउ सेकेंडली द कैपिलरी वाटर. दिस phenomenon you have already studied what is capillary water, what is capillary action, and all. Capillary water is nothing but the water which is in excess of hygroscopic water, and this water is available in the pore spaces of the soil. Okay, and third one is your gravitational water. Gravitational water is the water which is in excess of capillary water and hygroscopic water, and if proper drainage system is provided, this gravitational water can be drained out. Okay, now on the other hand of this diagram, if you see, there are four parameters: saturation, field capacity, permanent wilting point, oven dry. Okay, this limit is nothing but when we are going to put an oven dried sample just on the atmosphere. Now the wilting point, field capacity, and saturation. Saturation is nothing but if we are going to put all the pore spaces fulfilled by water, then the saturation will happen. Field capacity,
the same thing, the pore spaces are fulfilled with water. Only the thing is that saturation is nothing but the some air voids which are neglected by filled capacity, that air voids are also fulfilled by water, then the limit is saturation limit. Okay, the field capacity. And permanent wilting point is nothing but the lower limit of your field capacity. Okay, where the wilting of plants will occur. The hygroscopic water, as I have already explained, capillary water and gravitational water also. Now again in this diagram there is the limits. This the water between oven dried and permanent wilting point, this water cannot be used by plant because it is so little amount. The water between field capacity and permanent wilting point can be used by plants. And the water between saturation and field capacity, here so much of water is there, so it can be drained out. अभी फील्ड कैपेसिटी जो है, ये फील्ड कैपेसिटी आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फील्ड कैपेसिटी जो है वो रूट जोन पे डिपेंड करता है एंड आपके सॉरी डेप्थ ऑफ रूट जोन पे डिपेंड करता है एंड आपकी एक्सट्रैक्शन की कैपेसिटी कितनी है रूट्स की और प्लांट्स की, उस पर डिपेंड करता है. दैट मीन्स डिमांड कितनी है वाटर की, उतना उस पर डिपेंड करता है. Now, if suppose field capacity lowers, then we have to add some amount of water in the soil so that it will increase in quantity and the root zone of particular plant will fulfill by water and the growth of that particular plant will not be affected. Okay. Now, these are the some terms: soil moisture tension, soil moisture stress. Soil moisture tension is nothing but the force per unit area that must be exerted in order to extract the water from soil. That means आपके जो roots है plants के, वो सॉइल में से वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया, दैट इज़ योर सॉइल मॉइस्चर टेंशन. Okay, now this soil moisture tension is expressed in terms of atmosphere, and also it is known as a capillary potential or capillary tension or the force of suction. Okay, that means in which force, the amount of force the roots apply to suck the water, that is soil moisture tension. The soil moisture tension is inversely proportional to the moisture content of soil of given texture and structure. Now the second term is your soil moisture stress. Soil moisture stress. It is nothing but the sum of soil moisture tension and the osmotic pressure of soil solution. Okay. Now osmotic pressure, as you have already understood what is osmotic pressure. Osmotic pressure is nothing but the increase in force caused by salts present in the soil solution. Okay, the growth of plants is the function of both this soil moisture tension as well as the osmotic pressure, and hence the function of soil moisture stress. ओके, दैट मीन्स आपकी ग्रोथ जो है प्लांट की, वो सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस, ऐसे दोनों फिनोमिनन और पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. नाउ ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट शुड बी मेंटेन एज लो एज पॉसिबल बाय द कंट्रोल्ड लीचिंग. अभी ऑस्मोटिक प्रेशर, लीचिंग, सॉल्ट्स, दीज आर दी डिपेंडेबल पैरामीटर्स ऑन ईच अदर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर हमको लो रखना है. दैट मीन्स द सॉल्ट्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द इन द लो मैनर. कंट्रोल्ड लीचिंग करना है, दैट द सॉल्ट्स मे बी ड्रेन्ड आउट. नाउ द सेकेंड वन, soil moisture constants.
As I have already explained in the diagram what is saturation capacity, what is field capacity, I'll explain one again. Saturation capacity, this is also called as maximum holding capacity or total capacity, and it is nothing but the amount of water required to fill all pore spaces between the soil particles by replacing all air held in the pore spaces. ओके जो जितनी भी एयर है उतनी एयर हम लोग को क्या करनी है, वी हैव टू फील दैट एयर विद वाटर. Okay, now it is the uppermost limit of possible moisture content. Okay, now when porosity of soil is known, the saturation capacity can be expressed as equivalent centimeters of water per meter of soil depth. Okay, suppose that porosity is 50%. Okay, 50% by volume, then the moisture in each meter of saturated soil is equivalent to 50 सेंटीमीटर्स. मतलब जितनी पोरोसिटी है उतने पोर्स हम लोग को क्या करने हैं, फील करने हैं पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल. ओके, पर उतने सेंटीमीटर्स डेप्थ हम लोग को फील करनी है. That is your saturation capacity. Now the field capacity. Field capacity is the moisture content of soil after free drainage has removed most of the gravitational water. Okay. Now the concept of field capacity is extremely useful in arriving at the amount of water available in soil for plant use. Most of the gravitational water drains out through the soil before it can be consumptively used by plants. Now secondly, permanent wilting point, temporary wilting point and ultimate wilting point. These are the three wilting points. Firstly, permanent wilting point. What is permanent wilting point? It is that water content at which plants can no longer extract sufficient water from soil for its growth. Okay, मतलब वाटर कंटेंट है सॉइल में, लेकिन क्या है कि वो वाटर कंटेंट प्लांट्स के रूट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, फॉर इट्स ग्रोथ. ये जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है वो आपके अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट की लोअर रेंज है. ओके, लोअर रेंज है. नाउ व्हाट इज मीन बाय विल्टिंग ऑफ प्लांट. विल्टिंग ऑफ प्लांट इज नथिंग बट लोअरिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन ओवरऑल प्लांट. ओके, उसका डीके हो जाएगा, वो डेड डेड होगा प्लांट अगर उसको सफिशेंट वाटर नहीं मिला. ठीक है. नाउ दिस परमानेंट विल्टिंग point or wilting coefficient is depends upon the rate of water which is used by that plant, the depth of root zone and also the water holding capacity of soil. Okay, now the higher, if the demand of water or use of water is higher, the depth of root zone is also higher, then this wilting coefficient, then the permanent wilting will occur. Okay, and water holding capacity, if also it is lower, then wilting will occur. Okay, in hot summer season this wilting point is higher, and in cold season this wilting point is lower. ओके, दैट मीन्स कोल्ड सीजन में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट आपके एयर में भी होता है, सो उतना इवेपोरेशन और लॉसेस कम होते हैं वाटर के, सो दैट कोल्ड सीजन में आपका विल्टिंग पॉइंट लोअर होता है एंड हायर हॉट सीजन में वो हाइयर होता है. ठीक है. नाउ द टेम्पररी विल्टिंग. टेम्पररी विल्टिंग इज नथिंग बट जो आपका डे टाइम है, हॉट विंडी डे टाइम, in that time the plant will at that time plant will supposed to be wilting, but
that plant will recover in cooler portion of day. Okay. And here addition of water is not required. hmm? Now ultimate wilting. Abhi permanent wilting and ultimate wilting, these are two similar things but slightly different from each other. परमानेंट विल्टिंग में क्या होता है कि अगर हम लोग ने पानी ऐड किया वाटर में तो टर्जिडिटी जो है प्लांट की दैट विल रिकवर slowly, but in ultimate wilting plant will not at all regain its turgidity even after addition of sufficient water. Okay. अभी अल्टीमेट विल्टिंग कहाँ होगा तो hygroscopic water coefficient पे. Okay, this hygroscopic water is not at all useful for plant growth, so ultimate wilting is also at the at this water coefficient, hygroscopic water coefficient. Okay, now these two terms, that is available moisture and readily available moisture. Available moisture is nothing but the difference in water content of soil between field capacity and permanent wilting. I'll show the diagram so that you can easily understand. Here available moisture is nothing but the water content between this permanent wilting and field capacity. In between this it is called as the available moisture. Okay, and readily available moisture means the part of this available moisture which can be easily extracted by plant roots. Okay, सो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर जो होगा वो फील्ड कैपेसिटी से यहाँ पे कहीं पे होगा एंड दिस ओवरऑल डेप्थ इज नथिंग बट योर अवेलेबल moisture. Okay, I hope you have understood the phenomenon of soil water parameters. We'll discuss the numericals in next video and the numericals in next video and some derivations also. Thank you.